friends, myself Pooja Bhandare, Assistant Professor, Dadasai Balpande College of Pharmacy, Besa Nagpur. So in this video, we will discuss about the Pharmaceutical Inorganic Chemistry, Unit 1st, Part 3rd, Limit Test. In previous lecture, we will discuss about Limit Test. So इस लिमिट टेस्ट के दो पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में. सो फर्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं. लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में देखा था, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के बारे में देखा था, एंड देन लिमिट टेस्ट, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट. देन इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ arsenic. So arsenic is a well-known undesirable and harmful impurities which is present in the medical substances. ठीक है. तो all pharmacopoeia, arsenic is a harmful, toxic in nature. It will be also present in the medicinal substances. तो all pharmacopoeia prescribe a limit test for it. Pharmacopoeia methods is based on the GPAT test. जो हम लिमिट टेस्ट करते हैं आर्सेनिक की कोई अननोन सब्सटेंस में कितने अमाउंट में आर्सेनिक प्रेजेंट है, तो उसके लिए फार्माकोपिया में एक टेस्ट मेंशन की हुई है, उसको बोलते हैं हम GPAT टेस्ट. ऑल द स्पेसिफाइड रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर द arsenics आर मार्क्ड एज अ distinguished by the letter as T, which means it should be the arsenic free and should be themselves confirm the test for arsenic. बहुत सारे जो मेडिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उसको अगर हमने उसको हम लेबल करके रखते हैं कैपिटल टी में. अगर कैपिटल टी रहा तो इट इज फ्री फ्रॉम द arsenic. मतलब हमने उसको चेक किया है, कंफर्म किया है आर्सेनिक की टेस्ट करके, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक करके हमने उसको चेक किया है, एंड देन चेक करने के बाद हमें पता है कि इट इज फ्री फ्रॉम द arsenic. The principal limit test of arsenic is based on the reaction of arsine gas with hydrogen ion from yellow stain on mercury chloride paper in the presence of reducing agents like potassium iodide. It also called as GPAT test and requires special apparatus. ये टेस्ट करने के लिए हम एक apparatus रखता है, वो apparatus यूज करके हम उस टेस्ट करते हैं. उसका प्रिंसिपल रहेगा कि वो क्या करता है कि जो हमारा आर्सेनिक गैस होता है, जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है, अगर उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है, इट्स मीन्स उसके अंदर आर्सेनिक गैस प्रेजेंट है, तो आर्सेनिक गैस क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा एंड येलो स्टेन फॉर्म करेगा ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर. जो भी हमारा एपरेटस रहेगा उसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रहेगा, तो वो मर्क्यूरी क्लोराइड के ऊपर येलो स्टेन फॉर्म करेगा. अगर येलो स्टेन हमारा फॉर्म कर रहा है, दिस मीन्स हमारे उसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है. तो हम वहां पर भी स्टैंडर्ड और टेस्ट लेंगे, और अगर हम फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे येलो स्टेन स्टैंडर्ड का और टेस्ट का. फर्स्ट, arsenic present as arsine acid. ठीक है. In the sample is reduces arsenious acids by reducing agent like potassium iodide, stannous acid और zinc hydrochloric acids etc. देखो, जो भी हमारा आर्सेनिक होता है उसे आर्साइन गैस करने के लिए हमें प्रोसीजर्स होती है. पहले जो भी हमारा आर्सेनिक होता है उसको आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको रिड्यूसेस करते हैं आर्सेनियस by reducing agent like potassium iodide, stannous acids. Then जो भी arsenic acid is converted into the arsenious acids in the presence of stannous oxide, potassium iodide, stannous acid and zinc hydrochloride present. तो फिर उसके बाद जो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हमारे आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट करते हैं. देन हमारा आर्सेनियस एसिड इज फर्दर रिड्यूस टू द आर्सेनिक गैस. तो हमारा arsenic acid is converted into the arsenic gas by the hydrogens and react with the mercury chloride paper to give the yellow stain. यहाँ पर हमने वो रिएक्शन दी हुई है. हमारा जो सब्सटेंस रहता है उसके अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसको हमने डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट किया है. देन इट फॉर्म द arsenious acids. देन arsenic acid को हमने stannous acid के साथ रिएक्ट किया है, and this stannous acid is converted into the arsenious acids, and this arsenious acids is react with the nascent hydrogen and it form the arsenic acids. The nascent hydrogen means pure form of hydrogen.
The depth of yellow stain on the mercury chloride papers will depend on the quantity of the arsenic present in the sample. So this is a principle. When the sample is dissolved in the acid arsenic present in the samples get converted into arsenic acid by the action of reducing agent like potassium iodide, stannous acids. Arsenic acid get reduces to the arsenious acid. The nascent hydrogen formed during the reaction further reduces arsenious acid to arsenic gas, which react with mercury chloride paper, giving the yellow stain. This is the apparatus for the arsenic of the limit test of chloride. That will be the give the rubber bounce, then clip, then देखो यहाँ पर एक बॉटल रहेगी, देन उसकी बॉटल में 120 ml कैपेसिटी की बॉटल रहेगी, 2 mm डायमीटर का इसके अंदर यहाँ पर होल रहेगा, देन इसकी जो डायमीटर रहेगी वो 6.5 mm की डायमीटर रहेगी. यहाँ पर कॉटन का प्लग रहेगा क्योंकि वो मॉइस्चर विथ लीड एसिटेट सोल्यूशन, इसके अंदर हम कॉटन का प्लग डालेंगे और उस कॉटन के प्लग को हम मॉइस्ट करेंगे लीड एसिटेट सोल्यूशन के साथ. यहाँ पर हमारा क्लोराइड पेपर रहेगा, मर्क्यूरी क्लोराइड. यहाँ पर देखो ये जो चीज रहेगी हमारी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रहेगा. यहाँ पर ये क्लिप है. तो इस तरीके से हमारी 200 mm की यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब होती है. दिस इज अ रबर बंक्स. तो इस तरीके का एपरेटर्स होता है. देन एपरेटर्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. इट इज हैविंग द वाइड माउंटेड बॉटल 120 ml कैपेसिटी, 2.5 mm diameter. This bottle is filled with the rubber bunks through which passes the glass tube, 20 ml longer. एक्सटर्नल डायमीटर रहती है जो ट्यूब की रहती है वो 0.8 एंड इंटरनल डायमीटर रहती है 0.65 सेंटीमीटर. द ट्यूब इज कंसिस्ट जो भी ट्यूब रहती है ताकि यहाँ पर दिख रही है ये ट्यूब, इस ट्यूब के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. The tube is constricted to the lower and extremely to about 1 mm diameter, and there is above hole not less than 2 mm diameter and side tube near the constrict the part. The upper end of the glass tube is fitted with the two rubber bunks, each having the hole boards in the exactly 6.5 diameter. One of the bunks have been fitted with the upper end tube while the second bunks is fitted with the first bunks. And this mercury जो दोनों के इसके अंदर जो हमारे ये bunks होते हैं, ये दो बंक्स है, अपर बंक्स एंड लोअर बंक्स. देन उसके बाद द बंक्स आर केप्ट इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द रबर बैंड स्प्रिंग मैनर्स. एंड देन विथ बी द इट्स हैविंग द बॉटल मस्ट हैव द 6.5 इंटरनल सर्कल मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर. उसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रहेगा. ड्यूरिंग द टेस्ट इन्वॉल्व द गैस हैव पासिंग थ्रू द साइड द लोअर होल सर्विंग द एग्जिस्ट ऑफ द वाटर काउंटलेस द कंस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब. As an important features has been standardization of the area mercury chloride paper which is exposed to the reactions with the arsenic gas. Same टेस्ट सैंपल वही हम दो एपरेटर्स रहेंगे, एक में टेस्ट रहेगा हमारा, दूसरे में स्टैंडर्ड रहेगा. जो बॉटल रहेंगे उसके बॉटल के अंदर हम पूरी चीजें ऐड करेंगे. द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टैंडर्ड HCl arsenic free and kept in the wide mounted bottle. हम क्या करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग डाइल्यूट, उसको डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ. नोन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन इन वाटर एंड स्टैंडर्ड HCl, उसके अंदर स्टैंडर्ड HCl स्टैंडर्ड HCl डालेंगे, स्टैंडर्ड HCl डालेंगे, वो भी आर्सेनिक फ्री होना चाहिए. एंड केप्ट इन द माउंटेड बॉटल में हम उसके अंदर डाल देंगे. देन उसके बाद हम उसके अंदर 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे, दोनों में भी, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी. देन 5 ml ऑफ स्टैनस क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन एंड यहीं पर भी हम 5 ml ऑफ स्टैनस क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन डालेंगे. देन 10 ग्राम ऑफ ग्रेजुएटेड जिंक इज एडेड. यहाँ पर भी हम 10 ग्राम ऑफ ग्रेजुएटेड जिंक ऐड करेंगे. ऑल दिस रिएजेंट जो भी हम रिएजेंट डाल रहे हैं वो भी पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो फ्री फ्रॉम द आर्सेनिक होने चाहिए. क्लोज द कॉर्क, जैसे हम उसके अंदर जिंक डालते हैं उस जल्दी से हमें उसको क्लोज करना पड़ता है, इमीडिएटली उसके अंदर से गैसेस प्रोड्यूस होती है. Close the cork immediately, then the place bottle in water bath. Then close the cork immediately, then the place this bottle in the water bath for 40 degrees Celsius at 40 degrees Celsius for 40 minutes. जो भी हमने टेस्ट सैंपल प्रिपेयर किया है, स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर किया है, उस एपरेटर्स को ग्यूजेट एपरेटर्स भी बोलते हैं हम उसको. ग्यूजेट एपरेटर्स से हम उसके अंदर सारी चीजें ऐड कर देंगे, जो भी हमारा टेस्ट सैंपल रहेगा. देन उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड सैंपल रहेगा, फिर पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे हम उसके दोनों के अंदर, स्टैनस क्लोराइड ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जिंक
ऐड करेंगे, और जैसे हम जिंक ऐड करते हैं उसको इमीडिएटली हम उसको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद हम उसको वाटर बाथ पे रखते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 40 मिनट्स। देन उसके बाद जैसे हम वाटर बाथ करते हैं उसके अंदर से गैस प्रोड्यूसेस होती है, और दिस गैस प्रोड्यूसेस it comes in contact with the mercury chloride paper, and this mercury chloride paper gives the yellow stain. कंपेयर द येलो स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, हम उसको कंपेयर करेंगे टेस्ट को स्टैंडर्ड के साथ। The stain obtained on the mercury chloride paper is compared with the standard solution, and standard stain must be freshly prepared as it fades in keeping. Inferences: if the stain produces test is not deeper than the standard stain, the sample complies of the limit test for the arsenic. तो कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड का स्टेन अगर हमारा ज़्यादा आया एज कंपेयर टू द टेस्ट का कम रहना चाहिए एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज पास। Standard chloride is used for the complete evaluation of arsine. Zinc potassium oxide and standard chloride is used as the reducing agent. Hydrochloric acid is mixed to the solution acidic. लीड एसिडेट पेपर, जो हम उसके अंदर कॉटन प्लग डालते हैं जिसको हम लीड एसिडेट से मॉइस्ट करते हैं, उसका यूज ये है कि लीड एसिडेट जो रहते हैं ट्रैप इन हाइड्रोजन सल्फाइड विथ मे बी इन्वॉल्व अलोंग विद द आर्सेनिक, जो भी उसके अंदर जो भी हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं उसको ट्रैप कर लेता है लीड एसिडेट पेपर। फिर उसके बाद यूज एज अ स्टेनलेस हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन वही रहेगा। If pure zinc and HCl are used, the steady evaluation of the gas does not occur. This produces improper stain. Then, so it gives steady evaluation. Standard hydrochloric acid is used. Standard hydrochloric acid is used. H2S gas may be formed during the experiment. The zinc contains sulfide as an impurity. It gives the black stain. Then hydrochloric HgCl2 paper, and this interfere with the test. Use potassium iodide Ki converted into the HI and burning about reducing unreacted pentavalent arsenic or trivalent arsenic. This is the reason for this chemical's use. The next limit test of the limit test of ion. The limit test of ion is based on the reaction of ion in the ammonical solution with thioglycolic acid in the presence of citric acid to form the iron thioglycolate, ferrous thioglycolate complex, which produce the pale pink or deep reddish purple color in alkaline media. तो उस हिसाब से उसका वो प्रिंसिपल रहता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी हमारा आयन रहेगा वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के बाद थायोग्लाइकोलिक फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और दिस कॉम्प्लेक्स इज प्ले पिंक और रेडिश पर्पल कलर का रहता है। The color of the ferrous thioglycolate complex fades in the presence of air due to the oxidation. ठीक है। Also, the color is distorted in the presence of oxidizing agent strong alkali. The purple color is developed only the alkaline media. So, ammonia solution is used. जो पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड का, जब हम उसको हम फेरस के साथ कॉम्प्लेक्स करते हैं, दिस इज ओनली इन द अल्कलाइन मीडिया। सो वहां पर हम अल्कलाइन मीडिया यूज, अल्कलीज में वो पर्पल कलर शो होता है, तो इसलिए हम अल्कलाइन मीडिया यूज करेंगे अमोनिया सोल्यूशन। But the ammonia react with iron, form the precipitate ferrous hydroxide. Thus, the citric acid is used to prevent the precipitation of ions with the ammonia by forming the complex of the iron with iron citrate. So, simply we will discuss. Firstly, जो हम रहेगा हमारा जो पर्पल कलर होता है वो अल्कली में ही शो होता है। जो भी हमारा पर्पल कलर होता है फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स का अल्कलीज में फॉर्म होता है, और अल्कली बनाने के लिए हम उसके अंदर अमोनिया डालते हैं। अगर हमने उसके अंदर अमोनिया डाल दिया तो अमोनिया हमारा रिएक्ट करेगा आयन के साथ और फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। तो सिट्रिक एसिड इज प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ आयन with the ammonia by forming the complex with the iron citrate. And the limit test of iron gives the two Nessler cylinder. First one is compare with first one is labeled with the test sample, and second one is labeled with the standard sample. Sample is dissolved in the specific amount of water. Test sample is dissolved in specific amount of water, and then volume is made up of 40 ml, 2 ml of standard solution of iron diluted,
which contains 0.173 with water up to 40 ml, 0.173 gram of ferric ammonium sulfate plus 1.5 ml of HCl make up the 1000 ml with distilled water. ठीक है, ये हमारा टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम उसके अंदर ऐड कर देंगे. फिर उसके बाद ऐड टू ml ऑफ 20% ऑफ सिट्रिक एसिड. यहाँ पर भी हम ऐड टू ml ऑफ 20% सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड हमारा आयन फ्री होना चाहिए. देन उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड टेस्ट में. उससे में हम स्टैंडर्ड में भी ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड. देन ऐड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन अल्कलाइन एंड एडजस्ट विद द वॉल्यूम अप टू 50 ml. उसके अंदर अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे क्योंकि वो अल्कलाइन होने तक. देन सेम एडजस्ट करेंगे 50 ml वाटर डिस्टिल्ड वाटर के साथ. Keep aside for 5 minutes. Keep aside for 5 minutes. Colors developed is viewed vertically and compared with the standard solution. देखो यहाँ पर मैंने ये इमेज भी दी हुई है. दिस इज ये टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा. तो इस तरीके से कलर डेवलप होगा. देन दिस कलर्स कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वन. Observation: the purple color produced in the sample solution should not be greater than the standard solution. If the purple color produces in the sample solution less than the standard solution, the limit test will be the pass. Then standard, if the purple color produces in the sample solution is greater than the standard solution, the limit test will be the fail. Citric acid, पहले हमने रीजन बता दिया था. citric acid complex with the metal cation helps with the precipitations of ion by the ammonia and forming complex with its. उसके जो अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है आयन को, उसको वो प्रिवेंट करता है. थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज आयन. देन अमोनिया इज एडेड टू मेक द सॉल्यूशन अल्कलाइन. द पेल पिंक कलर इज विजिबल ओनली इन द अल्कलाइन मीडिया. सो वो अमोनिया हम उसी के लिए ऐड करते हैं कि हमें कलर दिख जाए, विजिबल कलर. The next is a limit test for heavy metals. The limit test for heavy metals is designed to determine the content of the metallic impurities that are colored by the hydrogen sulfide or sodium sulfide under the conditions of the test should not be exceed the heavy metals limit test given under the individual monograph. The heavy metals metallic impurity may be iron, copper, lead, nickel, cobalt, bismuth. The limit for heavy metals is indicated in the individual monograph in terms of ppm, part per million, and the substance being examined. In the substance, the portion any such impurities, heavy metals, has been expressed as the quantity of the lead required that produces color or equal depth in the standard comparison solution, having the definite quantity of the lead nitrate. Principle: it is based on the reactions between the metallic impurities with the hydrogen sulfide in the acidic medium is formed the brownish colored solution. So metal that the response, the limit test, lead, mercury, bismuth, silver, copper, etc. The first देखो metal impurities hydrogen sulfide के in the presence of acidic media. Then give the mercuric sulfide. तो mercury जो हमारा रहेगा वो sulfide के साथ react करेगा. सेम एग्जाम्पल कॉपर का रहेगा. हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो रिएक्ट होगा. देन सल्फाइड के साथ रिएक्ट हो जाने के बाद देन इन एसिडिक मीडिया गिव द कॉपर सल्फेट. द क्वांटिटी इज स्टेट दैट द हेवी मेटल्स लिमिट एंड एक्सप्रेस्ड एज अ पार्ट ऑफ द लीड बाय वेट पार्ट पर मिलियन. द टेस्ट सब्सटेंस. The limit test for the heavy metals has been based upon the reactions of the metals ion with the hydrogen sulfide under the prescribed conditions of the test, causing the formations of metal sulfides. जो भी हमारा heavy metals की reactions थे based on the hydrogen sulfides, based on the reactions of ions of the hydrogen sulfides under the prescribed conditions of the test, causing the formations of metal sulfides. This remains distributed in the colloidal state and give the brownish color. Metal impurity, hydrogen sulfide, acidic media, metal sulfate. ठीक है. Then IP limits for pharmacopoeia, limit for the heavy metals in 20 pm. The test solution is compared with the standard prepared using the lead solution as the heavy metals. The metallic impurities in the substance are expressed as the parts for the part per million.
Indian Pharmacopoeia has adopted two methods, method first, method second, and method third. This method is applicable for the sample which give the clear colorless solution under the specified condition of the test. The method is applicable for the sample which do not have a clear colorless solution under the specified condition of the test. And method third used for the substance which give the clear colorless solutions in the sodium hydroxide medium. Test solution, specific amount of sample with 25 ml of water dissolve. देन यहाँ पर 2 ml स्टैंडर्ड लीड सोल्यूशन हम उसके अंदर ऐड करते हैं. स्टैंडर्ड में हम लीड सोल्यूशन यूज करते हैं. देन 25 ml वाटर से हम डिसॉल्व करेंगे. एडजस्ट द pH 3 to 4. एडजस्ट द pH 3 to 4. dilute up to the 35 ml of water and mix. Dilute up to the 35 ml water and mix. 10 ml of hydrogen sulfate solution. 10 ml of hydrogen sulfate solution and dilute up to the 50 ml of water. Then mix the solution and then darkness observed with the white background. सेम टेस्ट हम दो नेस्ले सिलेंडर लेंगे, एक को टेस्ट लेवल करेंगे, एक को स्टैंडर्ड करेंगे. उसके अंदर टेस्ट के अंदर हमारा टेस्ट सैंपल ऐड करेंगे. स्टैंडर्ड के अंदर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लीड सोल्यूशन हम उसके अंदर ऐड करेंगे. पीएच एडजस्ट करेंगे 3 to 4. फिर उसको 35 ml डाइल्यूट करेंगे 35 ml वाटर के साथ. उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे. यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे. फिर उसको डाइल्यूट करेंगे 50 ml वाटर के साथ. मिक्स द सॉल्यूशन. देन डार्कनेस इज ऑब्जर्व अंडर द वाइट बैकग्राउंड. देन लिमिट टेस्ट फॉर द लीड. ये होगी हमारी लिमिट टेस्ट फॉर द हेवी मेटल्स. Lead is not most undesirable impurities in medicinal compounds and comes through the use of sulfuric acids. Lead is lime apparatus and glass bottles used in the storage chemicals. The limit test of lead is based on the reactions of lead and diphenyl thiobenzone in alkaline solution to form the lead dithiazone complex. Is red in color. The dithiazone is a chloroform is able to extract lead from the alkalized aqueous solution as a lead complex. ये डाइथाइजोन के साथ हमारा लीड रिएक्ट करेगा और लीड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. दिस लीड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स इज इन रेड ग्रीन कलर. द ओरिजिनल डाइथाइजोन इज हैविंग द ग्रीन कलर इज क्लोरोफॉर्म while the lead dithiazone is having the violet color. So the resulting color is end of the process is red. देखो हमारा अगर ओनली हमने डाइथाइजोन लिया तो वो हमारा ग्रीन कलर का होता है और हमारा जो लीड होता है, लीड जब डाइथाइजोन के साथ जाता है, लीड और डाइथाइजोन एक साथ होते हैं तो वायलेट कलर का होता है. तो ग्रीन और वायलेट इट्स कन्वर्ट इनटू द रेड. द इंटेंसिटी ऑफ दिस कलर कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लीड इन द सोल्यूशन. जो भी हमारी इंटेंसिटी डिपेंड रहेगी वो लीड के ऊपर डिपेंड रहेगी, कितने अमाउंट में हमारा लीड उसके अंदर प्रेजेंट है. द कलर ऑफ लीड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स इज क्लोरोफॉर्म हैज बीन कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ लीड सोल्यूशन ट्रीटेड विद द सेम मैनर. तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले इसमें किया था, स्टैंडर्ड के साथ हम टेस्ट को कंपेयर करेंगे. In this method, the lead present in the impurities in the substance gets separately extracting an alkaline solution with dithiazone extraction solution. The interference and influences of this other metal ion has been eliminated by the adjusting optimum pH, the extraction by the employing ammonium citrate and potassium cyanide. उसके अंदर जो भी दूसरे मेटल्स आयंस होते हैं उसको हम पहले एलिमिनेट कर देंगे एंड फिर उसके अंदर जो लीड की इम्प्यूरिटीज है उसको हम चेक करेंगे. मेथड सैंपल सॉल्यूशन इज ट्रांसफर्ड इन द सेपरेटिंग फनेल. यहाँ पर हम सेपरेटिंग फनेल यूज करते हैं. 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट. उस सेपरेटिंग फनेल, दो सेपरेटिंग फनेल लेंगे. फर्स्ट हम स्टैंडर्ड लेवल करेंगे, सेकंड को हम टेस्ट लेवल करेंगे. फिर उसके बाद सैंपल सॉल्यूशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द सेपरेटिंग फनेल और यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे सेपरेटिंग फनेल में. 286 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट ऐड करेंगे उसके अंदर. 2 ml ऑफ पोटेशियम साइनाइड ऐड करेंगे एंड 2 ml ऑफ हाइड्रोक्सामाइल HCl आर ऐड. फिर उसके बाद हम 2 drops ऑफ फिनॉल रेड ऐड करेंगे. Solution is made alkaline by adding ammonia solution. Then this is extracted for 5 ml portion dithiazone solution until becomes the green. The combined dithiazone extract are shaken. फिर उसके वो डाइथाइजोन एसिड डालने के बाद उसको हम शेक करेंगे 30 मिनट्स पे. 30 फिर उसके बाद हम 30 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे. क्लोरोफॉर्म लेयर फॉर्म होगी, उसको हम पहले उसके अंदर जैसे ही हम
डायथोजन एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे, उसको शेकन करेंगे, 30 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, क्लोरोफॉर्म की लेयर रहेगी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। देन दिस एसिडिक सोल्यूशन 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डायथोजन सोल्यूशन ऐड करेंगे इज एडेड एंड 4 ml ऑफ अमोनियम साइनाइड सोल्यूशन ऐड करेंगे। फिर उसको शेक करेंगे 30 सेकेंड के बाद। सिमिलरली प्रिपेयर स्टैंडर्ड, जैसे हमने यहाँ पर हमने पूरा टेस्ट का बताया था, सेम उसमें स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे सेपरेटिंग फनेल में, जहाँ पर हमारा सैंपल सॉल्यूशन होता है उसके वहाँ पर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। Observation: the intensity of the complex depend on the amount of lead of the solution. The color produced in the sample solution should not be greater than the standard solution. Same रहेगा हमारा, जो भी कलर प्रोड्यूस होता है सैंपल सॉल्यूशन में वो लेस रहना चाहिए एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देन द लिमिट टेस्ट ऑफ लीड इज पास। अगर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा रहा तो लिमिट टेस्ट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो हमारा कलर रहेगा अगर वो कम रहा एज कम्पेयर टू द सैंपल सॉल्यूशन तो हमारी लिमिट टेस्ट फेल होती है। If the color produced in the sample solution is less than the standard solution, the sample will be the pass. Then if the color produced in the sample solution is greater than the standard solution, the sample will be the fail. Okay. Then reason कौन से डालते हैं? अमोनिया सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिल डाइक्लोराइड used to make pH optimum, influences other impurity. Phenol red is as an indicator to develop the color. End of the process. Lead present in the impurities in the substance gets separated by the extracting by the alkaline solution with diazoxide extraction solution. ये रहेगा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन सेम हमने प्रोसीजर जो बताई थी, यहाँ पर हम टेस्ट सॉल्यूशन डालेंगे सेपरेटिंग फनेल में, यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे 6 ml अमोनियम साइट्रेट सॉल्यूशन, देन 6 ml अमोनियम साइट्रेट सॉल्यूशन, 2 ml पोटेशियम साइनाइड, 2 ml पोटेशियम साइनाइड, फिर उसके बाद हम हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे 2 ml दोनों में, 2 drops of phenol red, 2 drops of phenol red, make the solution alkaline by adding the ammonia solution. यहाँ पर भी वही ऐड करेंगे, solution alkaline ऐड करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन से, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। Then extract with 5 ml डाइथोजन until becomes green, उसके हम डाइथोजन ऐड करेंगे जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाता। कंबाइन विद डाइथोजन एक्सट्रैक्ट शेकन, उसको 30 मिनट तक हम शेक करेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे दोनों के अंदर 30 ml। फिर दिस एसिड सॉल्यूशन 5 ml स्टैंडर्ड डाइथोजन सॉल्यूशन, यहाँ पर भी 5 ml स्टैंडर्ड डाइथोजन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। देन ऐड 4 ml अमोनियम साइनाइड, यहाँ पर भी ऐड 4 ml अमोनियम साइनाइड, शेक फॉर 30 मिनट्स, ऑब्जर्व द कलर। एक्वायस अमोनिया एडेड इन द लिमिट टेस्ट, यहाँ पे देखिए लिमिट टेस्ट हमारा सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा। इन दिस लिमिट टेस्ट लीड PBS इज प्रोड्यूस, addition of standard H2S and solution completes leads. pH 3 to 4 is necessary for the precipitations of the PBS, so aqueous ammonia acetic acid is added to maintain the pH. Then thank you for watching this video. If you like this video, like it, share it with your friends and subscribe my YouTube channel. Then we will all about the unit first. We will complete the unit first. We will take about unit first like introduction in organic chemistry, then history of pharmacopoeia, Indian pharmacopoeia, then impurities, types of impurities, source of impurities, then limit test. In limit test we will give the limit test of chloride, limit test of sulfate, modified limit test of chloride, modified limit test of sulfate, limit test of heavy metals, limit test of arsenic, limit test of iron, and limit test of leads. If you like this video, please like it, and then if you have any notes regarding this, I have provided the link in the description box. If you have any issue or any queries regarding this subject, please comment, and any suggestion for this video, please comment on this. And then we will in next video we will discuss about the unit 2nd, and we will upload it very soon. Please so keep watching. Thank you so much.